Money demand supply creation. Money's demand supply creation. Demand of money. Liquidity preference theory. Liquidity liquidity preference theory. Demand of money. Liquidity preference theory. British economist John Maynard Keynes. The General Theory of Employment, Interest and Money. 1936 noted people preferred to keep part of asset in liquid form, cash money, with three motives. British economist John Maynard Keynes. General Theory of Employment, Interest and Money 1936. तीन तरह के लिए लोग कैश को रखता है. कैश मनी विथ थ्री मोटिव्स. Transaction motives for using money as a medium of exchange, for buying daily milk, vegetable, fruits. Precautionary motives to protect against sudden unforeseen expenditure, medical emergency, impulsive purchase during holiday trips. Speculative motives. Investor hold cash to make best use of any investment opportunity that arises later, waiting for gold land price to fall. I will use my cash to buy it, also known as asset demand of money. The amount of money held in cash form vary inversely with deposit interest rate. If higher interest available in bank deposit, if higher interest available in bank deposit, people would invest money in bank instead of money in liquid form या कैश. अगर बैंक में ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलेगा तो लोग बैंक में पैसा रखेगा, अपने पास नहीं रखेगा. टोटल डिमांड ऑफ मनी फैक्टर इफेक्टिंग. Total demand of money factor affecting. Have to withdraw more money from bank to buy milk, veggie, petrol, inflation. uh, transacs- transaction mod- transaction demand. uh, GDP, shopping, paying salary, buying raw material. Speculative demand, inversely proportional to interest rate. अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा रहेगा तो स्पेकुलेटिव डिमांड कम रहेगा तो ज़्यादा रहेगा. इफ बैंक या बॉन्ड नॉट पेइंग गुड डिपॉजिट इंटरेस्ट, वी विल विड्रॉ मनी एंड वेट टू इन्वेस्ट इन गोल्ड या प्रॉपर्टी. टोटल डिमांड फॉर मनी. What does above chart means? Explained in video. Total demand for money in economics. Transaction demand and plus speculative demand. Total demand for money in economics. Transaction demand and speculative demand. Why have not mentioned speculative demand in above formula? Because NCERT has not mentioned. Supply of money. Asset and liquid. Asset factory machine. Liabilities payment for raw material, staff, salary, लोन. एसेट लोन. बैंक के लिए एसेट लोन है, लाइबिलिटी डिपॉजिट है. बैंक के लिए उल्टा है. टाइम लाइबिलिटी ऑफ बैंक. टाइम लाइबिलिटी ऑफ बैंक एफ डी आर डी. फिक्स डिपॉजिट, cumulative recurring deposit, staff security deposit. Bank legally not required to pay customer before maturity, but bank may pay after deducting penalty and interest. Public park more money here because better return, higher interest rate, less liquid. मतलब टाइम डिपॉजिट, टाइम लाइबिलिटी ऑफ बैंक, फिक्स डिपॉजिट, क्यूमुलेटिव रिकरिंग deposit, staff security deposit. Bank legally not required to pay customer before maturity, but bank may pay after deducting penalty interest. Demand liability of a bank. Current account, saving account, demand draft, overdue balance in fixed deposit, overclaim deposit. What does it mean?
What is Nestor Vestor account? Public park less money here, more liquidity because easily convertibility into cash on demand. The dash is not included in asset of a commercial bank in India. Answer is a deposit. Liability of asset. Liquidity. Ease of converting an asset into cash. Cash is a most liquid asset. Cash is a most liquid asset. Highly liquid asset. Gold, demand deposit, government security, treasury bill, share, bond of reputed companies. Highly liquid asset, gold deposit, demand deposit, government security, treasury bill, share, bond of reputed companies. Relatively illiquid asset. Home, real estate, painting, sculpture because difficult to find buyer at right price instantly. Liquidity injection, infusion. Refer to phenomena when liquidity injection infusion refer to phenomena when RBI buy बैंक या NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन गवर्नमेंट बाय मतलब आरबीआई बाय कर रहा है मतलब आरबीआई मार्केट में पैसा दे रहा है लेने के लिए तो पैसा ठूस रहा है. लिक्विडिटी ट्रैप रेफर टू एंड सेशन. मेजर ऑफ मनी सप्लाई. Objective to make good nutrition scheme for India. To make good nutrition scheme for India, government will have to first find weight of citizens. Similarly, to have good monetary policy, RBI will have to find quantity of money in system. Definition. Money supply means total amount of money in economic at any given time. Money supply play crucial roles. Money supply play crucial role. Price level, inflation, interest rate on deposit and loan. RBI measure the money supply through indicator M1, M2, M3, M4. Apply logic to derive formula M3 equal to M1 plus M3 equal to M1 plus time deposit with bank. M3 is a mostly commonly used measure of money supply, also known as aggregate monetary resources, aggregate money supply, because out of all money supply indicator MO2 M4. This indicator RBI focus on the most of its analysis using designing monetary policy. In above formula for money supply, we are only counting net demand, net time deposit, only public deposit in bank. We are not counting interbank deposit, one commercial bank deposit in other commercial bank. अब इसको देख लेते हैं. मेजर ये करेंसी coin and currency with public, commercial bank, post office, saving bank, liquidity quantity. नैरो मनी M1 पब्लिक के पास जो पैसा है, कॉइन एंड करेंसी विद पब्लिक. डिमांड डिपॉजिट पैसा, कॉमर्शियल बैंक का डिमांड डिपॉजिट. तो ज़्यादा लिक्विडिटी है, क्वांटिटी बहुत कम है, बहुत कम लोग जमा करता है. नैरो मनी में M2 पब्लिक के पास सब जगह रहेगा, कॉइन एंड करेंसी विद पब्लिक. डिमांड डिपॉजिट प्लस डिमांड डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक. थोड़ा उससे कम लिक्विडिटी, क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा. ब्रॉड मनी M3 पब्लिक के पास पैसा होगा, डिमांड डिपॉजिट होगा, टाइम डिपॉजिट होगा, तीनों कॉमर्शियल बैंक होगा. पब्लिक और कॉमर्शियल बैंक का डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट. पोस्ट ऑफिस का इंक्लूड नहीं होगा. M4 में सब होगा, पब्लिक के पास, कॉमर्शियल बैंक के पास, टाइम डिपॉजिट, ये सबसे ज़्यादा पैसा यहाँ होगा और लिक्विडिटी बहुत कम होगा. M1 डिमांड डिपॉजिट, M2 डिमांड डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, M3 डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक, M4 सब लिक्विडिटी बहुत कम, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा.
Corona. Initially month of lockdown May to May 2020 deposit decreases because people withdraw money in panic and precautionary motive. Although in later month unlocked down and normalcy increase money deposit by December 2020. Why M3 is aggregator money? Why M liquidity of M4 is less than M3? क्वेश्चन ना चलेगा जिधर. If you withdraw 1 lakh in cash from demand deposit account at your bank, immediate effect on aggregate money supply in economic will be uh, to to leave it unchanged. Leave to unchanged because यहाँ पब्लिक के पास पैसा आ जाएगा. ठीक है. M money supply M3. MO also known as reserve money or high powered money. Formula in separate section. M3 aggregate monetary resources, aggregate money supply. Money multiplier M3 divided MO. Money multiplier M money multiplier M3 divided by MO. More explanation in separate section. The situation 2021 में quantity increase but growth lower than 2020. Quantity increase but growth lower than इतना 5.6 into इतना 5.2 into so money multiplier decreaser than 2020. Reason banker can't find enough loan taker so park large amount of deposit with RBI under reverse repo window. Call money, notice money, term money. ये सब क्या होता है? The term used these terms are used when bank non-banking financial company lend borrow money among themselves for short term less than 1 year. Call money borrowed for 1 day. Call money borrowed for 1 day. This duration is called overnight. Call money borrowed for 1 day. Notice money borrowed for 2 से 14 दिन तक. नोटिस मनी कॉल मनी एक रात के लिए जैसे कॉल गर्ल होता है वैसे कॉल मनी होता है एक रात के लिए. कॉल मनी borrowed for 1 day. Duration is also called this duration is also called overnight. Term money exceeding 40 days but less than 1 year. अगर कॉल मनी है तो एक रात के लिए. नोटिस मनी है तो 2 से 14 दिन के लिए. टर्म मनी है तो exceeding 40 days but less than 1 year. Do not mix ever word with broad money, narrow money, M3, M2, M4. Full reserve banking versus frictional reserve banking. Full reserve banking versus frictional reserve banking. Frictional reserve banking हमारी डिपॉजिट वापस करो अभी के अभी. कैन बैंक गिव डिमांड डिपॉजिट एज ए लोन? Frictional reserve money? No. Full reserve money. More safety, less economic growth. Full reserve money, more safety, less economic growth. Can banker give money from demand deposit as a loan? Can banker give money from demand deposit as a loan? Current account, saving account. Full reserve banking? No, and consequently banker may not pay interest to demand deposit. Frictional reserve banking? Yes, can give. Can banker give money from time deposit as a loan? Yes, we can. Full reserve money. Frictional? Yes, can give. Bank vulnerability to sudden panic withdrawal by client known as bank run. Less because demand deposit not given as a loan. More because both time and demand deposit are given as a loan. So Vijay Mallya may flood the country. It will create more problem.
Banker ability to help in economic growth. Less. It gives less liquidity of loan. More. India uses frictional reserve banking. India uses frictional reserve banking. बैंक वल्नरेबिलिटी टू सडन पैनिक एंड विड्रॉल बाय क्लाइंट, इसमें कम होगा क्या कि डिमांड डिपॉजिट को लोन के तौर पे नहीं बेचता है, बस टाइम वाला को बेचता है। मोर बिकॉज दोनों पैसा जाता है, विजय माल्या लेकर भाग जाएगा। बैंकर एबिलिटी टू हेल्प इकोनॉमिक ग्रोथ। लेस बिकॉज इट गिव्स लेस क्वांटिटी ऑफ लोन, ये ज़्यादा करता है। कैन बैंकर गिव मनी फ्रॉम डिमांड डिपॉजिट एज ए लोन? फुल रिजर्व में बैंकिंग नो, एंड कॉन्सिक्वेंटली बैंकर में नॉट पे इंटरेस्ट टू डिमांड डिपॉजिट। ये पब्लिक को पैसा भी नहीं देता है और मतलब इंटरेस्ट रेट भी नहीं देता है, और उसका पैसा यूज़ भी नहीं करता है लोन करने के लिए, बस मतलब सेफ्टी के लिए रख देता है, एक तरह से सेफ्टी बॉल पे डिमांड डिपॉजिट में, और बाद में उसका फ़ी वो कुछ चार्ज कर लेता है। फ्रिक्शनल रिजर्व बैंकिंग में हाँ, आया पैसा निकालो, पब्लिक को बांटो, लोन में दो, कमाओ। कैन बैंकर गिव्स मनी फ्रॉम टाइम डिपॉजिट ऐसे लोन? हाँ, दोनों में दे सकते हैं। ये कम वल्नरेबल है क्योंकि डिमांड डिपॉजिट पैसा में नहीं जाता है, ये ज़्यादा है क्या है कि दोनों पैसा जा रहा है। ये कम मदद करता है, ये ज़्यादा मदद करता है। ख़त्म। इंडिया यूजेस इंडिया यूजेस फ्रिक्शनल रिजर्व बैंकिंग। मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर। RBI cash reserve ratio control frictional reserve banking and credit creation by commercial bank into following manner. RBI cash reserve ratio control frictional reserve banking and credit creation by the commercial bank in following manner. High powered money M0, जो कि पूरा कैश फॉर्म में, कॉइन या कैश फॉर्म में पब्लिक के पास, और डिपॉजिट 100 किया, लोन 90 का दे देगा, 10% रिजर्व, तो मनी मल्टीप्लायर। स्टॉक ऑफ टोटल M3, स्टॉक ऑफ हाई पावर्ड मनी। मनी मल्टीप्लायर फार्मूला M3/M0। हाउ इज दिस पॉसिबल? आई डिडेंट अंडरस्टैंड, छोड़ो ना। CRR 4%, तो मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट 25 टाइम। व्हेन CRR इज 100, मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट 1 गुना, मतलब कुछ नहीं होगा। 100% CRR मीन्स आई कांट गिव लोन टू एनी वन फ्रॉम डिपॉजिट। लोन ही नहीं मिलेगा तो फिर मैं क्या करूं? मर जाऊं? नॉन फंक्शनल हो जाऊं? नो CRR शुड बी 100%. लेट कीप CRR smaller than 100%, example 4%, then money multiplier will be greater than 1 in functional economics. When CRR 4%, जब CRR 4% रहेगा, मनी मल्टीप्लायर 25 के स्पीड से भागता है। However, in reality, money multiplier may be lower than 25 due to poor banking penetration. In functional economics, money multiplier is always greater than 1. CRR will always be less than 100%. Money multiplier directly improve the reduction in money multiplier directly improve with decrease in reduction in CRR घटेगा तो मनी मल्टीप्लायर बढ़ेगा। मनी मल्टीप्लायर इनडायरेक्टली इम्प्रूव द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कंजप्शन, लोन डिमांड इंक्रीज, बैंकिंग पेनिट्रेशन, digital economics and less cash economics. Money multiplier improve in banking. Money multiplier improve with increasing banking penetration, financial inclusion. Boom period. Whenever loan demand increase, RBI adopt cheap, easy, dovish expansionary monetary policy to combat deflation.
In 1960 less than 2x, 90s 3x, at present 5x. What will be impact on SLR change on a money multiplier? Can't be written mathematically. मनी मल्टीप्लायर फ्रॉम 2019 से 2021 घटता बढ़ता रहता है कुल मिला के. मनी मल्टीप्लायर फॉलन फ्रॉम 5.6 ऑन 20 से 5.2 because if bank kept loaning to household and business firm, then M3 by M1 multiplier would grown thoroughly, leading to deposit activity from one bank to another bank. But if deposit is lending activity seems to be slow down due to corona, afterward money multiplier did not improve. Then between 21 से 22 money multiplier remain stable in range of 5.2 5.1. Note, there may be 100 other factors as well affecting this indicator, but poor but gives poor cost benefit. Learning all those things from MCQ point of view. Money multiplier M3 by M0 1981 से 2020 यहाँ से बढ़ना चालू किया 1996 अब बढ़ता ही जा रहा है, घटता बढ़ता है, पर सबसे ज़्यादा 2017 में था मनी मल्टीप्लायर. मिड बिटवीन 19 टू 2016-17 मनी मल्टीप्लायर मेजर्ड रेशियो M3/M1 was mostly increase. रीज़न बिहाइंड दिस वीडियो में बताएगा, छोड़ो. मनी मल्टीप्लायर इन इकोनॉमिक्स इंक्रीज in the banking habit of a population. M0 creation of money. MO reserve money, government money, high powered money is issued under RBI Act. RBI issue department with condition that issue department asset must match with liability. Creation of money. MO reserve money, government money, high powered money issued under RBI Act. RBI issue department with condition that issue department asset must match its liability. Asset of issue department. ये asset of issue department, liability of issue department. Rupee coin. Buy coin and 1 note rupees from government and circulate as a agent of government. गोल्ड कॉइन 200 करोड़ कम से कम होना चाहिए. गोल्ड बुलियन 115 करोड़ का कम से कम होना चाहिए. फॉरेन सिक्योरिटी इंक्लूडिंग IMF 400 करोड़. इंडियन गवर्नमेंट सिक्योरिटी थ्रू विच गवर्नमेंट बोरो मनी फ्रॉम RBI एंड रिटर्न प्रिंसिपल इंटरेस्ट एट लेटर. टोटल बैंक नोट इन सर्कुलेशन which consist of held by public, held by other bank in vault cash, amount kept by bank for day-to-day operation, other deposit in RBI, public bank and government, such as PM Garib Kalyan Yojana, under which black money holder was required to deposit 25% of his black money in RBI for lock-in period of 4 years. MO increase when RBI assets side increase. Government borrowing more from RBI using government security. बोले तो पैसा बढ़ेगा जब RBI का एसेट बढ़ेगा तो सरकार उससे ज़्यादा कर्जा ले पाएगा, बोरो करेगा. मनी सप्लाई एंड FRBM एक्ट. money supply FRBM Act. Short term less than 1 year treasury bill, ways and means advance, CBM पता नहीं फुल फॉर्म इन 1C. लॉन्ग टर्म 1 साल से ज़्यादा गवर्नमेंट सिक्योरिटी. गवर्नमेंट वांट लोन. I am public debt manager. I will handle this process from my e-cover portal. Brand new car, primary market.
used car, secondary market. Loan to government by investor. Normally RBI not buy from here due to FRBM Act. RBI buy or sell here. It is called open market operation. Fiscal Responsibility and Budget Management Act. Fiscal Responsibility and Budget Management Act. Government has to control its fiscal deficit within X percent of GDP. Government cannot withdraw. Government has to control its fiscal deficit within X percent of GDP. Government cannot borrow from RBI. Other words, RBI cannot buy government loan instrument from its primary market except in two situations: short term ways and means, during war, disaster, agriculture crisis, big fall in GDP. Uh, Government cannot borrow from RBI. In other words, RBI cannot buy government loan instrument from itself from primary market except in two conditions: short term ways and means advance, during war, disaster, agriculture crisis, big fall in GDP. RBI can buy or sell government loan instrument from secondary market. सेकेंडरी मार्केट में बेच या खरीद सकता है. दो कंडीशन में प्राइमरी मार्केट में बेच सकता है, खरीद सकता है: जब वेज एंड मीन्स एडवांस, ड्यूरिंग वार, डिजास्टर, एग्रीकल्चर क्राइसिस, बिग फॉल इन GDP फ्रॉम अदर इन्वेस्टर इन ओपन मार्केट ऑपरेशन. मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट. एक्सपेंस 15 है, इनकम 5 है, 10 रुपया घट गया. RBI पैसा छाप के दो ना, प्लीज़ प्रिंट 10 रुपीज़ एंड गिव मी. डेफिसिट 15. RBI नहीं देंगे. It means RBI printing more currency note to give loan to government. However, this process is difficult and not easy due to FRBM Act condition learn above. Whose responsibility is it to exchange public torn the soiled 1 rupees note? RBI will do it as a agent of government. अगर पैसा अगर सड़ जाता है तो RBI का ये काम है, as a agent of government. Whose responsibility is it to exchange broken coin? First of all, it's difficult to break coin unless with metal cutter. Secondly, I did not lose sleep over James Bond Sona. Question: for UPSC point of view, common sense suggests that RBI is exchanging torn rupees 1 rupees note. Then RBI would exchange coin as well. All coin and one paper note is whose liability? RBI or government? All coin and 1 rupees note are issued by government. RBI circulate them as a agent of, मतलब सिक्का छापना और 1 रुपया का नोट सरकार इशू करता है, issued by government. पर RBI circulate them as a agent of government, पर बांटता है RBI. However, this item are liability of government as per RBI website. So all coin and 1 paper note are liability of government. Answer ये है, all coin and 1 paper note are liability of government. However, some book interpret that RBI is circulating them. RBI is responsible for getting torn off 1 rupee note exchange, so RBI is liability. If doubt for MCQ, that take government as answer, पर आंसर होगा सरकार होता है उसका liability. Can government borrow as much money as they want via government security? Answer: no. There are legal limit on government borrowing under Fiscal Responsibility and Budget Management Act. RBI money supply is limited because above asset liability method balance beyond. But what if government issue large number of coin and 1 rupees note before election to keep voter happy? Will not create problem in MO and economics? Answer: too much money supply will enough good
Too much money supply without enough good supply inflation. Too much money supply without enough good supply inflation. So sensible government will not do such drama. Beyond that, I will not interested in engaging PhD. मनी सप्लाई ऑब्जर्वेशन बाय इकोनॉमिक सर्वे 2023 M3 एग्रीगेट डिपॉजिट करेंसी विद पब्लिक ऊपर नीचे हो रहा है M3 ऊपर नीचे हो रहा है करेंसी विद पब्लिक ऊपर नीचे हो रहा है मतलब 21 से गिर रहा है मनी मल्टीप्लायर स्टेबल अराउंड 1.1 to 1.5 to fight inflation RBI pursuing tight monetary policy overall M3 growth परसेंट फॉलिंग ईयर 2022 ऑब्जर्वेशन बाय इकोनॉमिक सर्वे 2023 पब्लिश जनवरी 2023 सिंस RBI increases CRR banker deposit in RBI increase banker deposit in RBI increase money supply increase what and how मनी मल्टीप्लायर 5.2 2021 से 5.1 2022 सो ब्रॉडली रिमेन द स्टेबल एंड नॉट मच चेंज व्हाट इज CIC एग्जैक्ट फार्मूला करेंसी इन सर्कुलेशन economic survey didn't give Google giving vague answer currency in circulation is an indicator to measure cash as a payment instrument instead of uh, payment instruments such as check and NIFT RTGS card. Currency in circulation growth percent decline from reason corona led precautionary demand for cash has reduced and subsidized. People are keeping less quantity of cash in hand and depositing more quantity in bank. 2022 रशिया यूक्रेन वार टेम्पोररी इंक्रीजेस इन प्रिक्योनरी कैश होल्डिंग circulation currency in circulation increase volatility velocity in money circulation if average number of time money passes from one hand to another during given time period you bought पेन वर्थ 10 रुपया का शॉप दुकान से ही यूज सेम 10 रुपया to buy tea from another shop same currency note perform function of two this velocity of money circulation is effect after following factor income distribution income money in hand of poor has higher velocity than rich people if more people borrow money higher the velocity hence developed country if more people borrow money higher velocity hence developed country higher velocity because people save less spend more because of consumerist lifestyle and confident in government social security pension system USA boom period in economics more raw material purchase and hiring higher velocity monetary policy अब आया ये सही चीज़ monetary policy CRR monetary policy of RBI CRR SLR repo MSF open market operation priority sector lending fiscal policy by finance minister taxation subsidy public expenditure disadvantage PPP help in saving GDP इन्वेस्टमेंट अनएम्प्लॉयमेंट को घटाने में इन्फ्लेशन को घटाने में इंक्लूसिव ग्रोथ एंड मोर monetary policy is a microeconomic policy designed by central bank of country to manage money supply and interest rate it help in shaping variables such as inflation consumption saving in investment capital formation significance monetary policy play an important role in price stability inflation control economic growth job creation social justice in any economic मतलब मॉनेटरी पॉलिसी इन्फ्लेशन में काम करता है
जो कि प्राइस स्टेबल रखता है, इकोनॉमिक ग्रोथ में करता है, जॉब क्रिएशन में काम करता है, सोशल जस्टिस में काम करता है। यहाँ पे सेविंग, जीडीपी, इन्वेस्टमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, इंक्लूसिव ग्रोथ एंड मोर। मिल मिल्टन फ्राइडमैन, this American economics research on monetary policy made this subject more popular. He also won Nobel Prize in this regard. फिलिप कर्व, इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट घटेगा, सो स्टेबल एंड मॉडरेट इन्फ्लेशन इज़ गुड फॉर इकोनॉमिक्स। फिलिप कर्व, इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट घटेगा, सो स्टेबल एंड मॉडरेट इन्फ्लेशन इज़ गुड फॉर इकोनॉमिक्स। So keep inflation RBI tried to keep inflation 2 to 6% consumer price index of all India using its bi-monthly monetary policy made by its 6-member statutory monetary committee. So RBI tried to keep inflation with 2 से 6% CPI consumer price index using its bi-monthly monetary policy made by its 6 member, कितना member, 6 member statutory monetary policy committee using its bi-monthly monetary policy made by its 6-member statutory monetary policy committee. Monetary policy quantitative tool, ये क्वांटिटेटिव मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, मोर, और क्वालिटी मतलब अच्छा, क्वांटिटेटिव टूल also known as general or indirect tools, as they affect entire economics or not just particular section. पूरा जनरल और इनडायरेक्ट टूल का है कि पूरा लोग को असर करता है, पर्टिकुलरली किसी एक को नहीं करता. ऑल्सो नोन एज जनरल और इनडायरेक्ट टूल एज दे इफेक्ट इंटायर इकोनॉमिक नॉट जस्ट ए पर्टिकुलर सेक्टर. मॉनेटरी पॉलिसी में क्वांटिटेटिव टूल मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, क्वांटिटेटिव ज़्यादा से भी मोर. Statutory reserve requirement. CRR, SLR, fight inflation, deflation. Monetary policy tool, CRR, SLR, PSLV. RBI pay 0% interest rate to access on CRR. RBI pay 0% interest rate on CRR. RBI pay 0% interest rate to CRR. CRR, SLR, buffer and safety during bank run. CRR 0.5 4.50, SLR 18, loan 40% to priority sector lending, HDF reverse repo. If enough loan taker not found, Axis may invest surplus and leftover money in RBI to earn interest. Deposit interest, SDF reverse repo. Priority sector lending, some profit possible for Axis. Farmer, weaker section, small businessman. CRR and SLR are collectively known as variable reserve ratio or statutory reverse ratio. CRR, SLR are collectively known as variable reverse ratio or statutory reverse ratio. Variable reserve ratio or statutory reverse ratio.
CRR, cash reserve ratio. Bank must keep this much deposit or balance with RBI. RBI doesn't pay interest on this deposit except in extraordinary circumstances like 1999 banking slowdown. SLR, full form statutory liquid ratio. Bank must keep this much deposit in liquid assets such as cash, gold, government security, treasury bill, state development loan bond and other security notified by RBI. Bank earn no profit या interest as such. Some profit may be involved. SLR से CRR first suggested by British economist J.M. Kenyon, first introduced mandated under RBI Act 1934, mandated under Banking Regulation Act 1949. ये जरूरी है. RBI can fix any amount of CRR. Legally, there is a no minimum or maximum limit. Although in real life, bank RBI will not give CRR 100%. Otherwise, no bank can give loan to economic will stop functioning. Presently, 4.50 of net demand and time liability of बैंक प्रेजेंटली 18 है. NDTL बोले तो नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी ऑफ ए बैंक. लीगली SLR कांट बी मेड मोर देन 40%. लीगली ये 40% से ज़्यादा हो ही नहीं सकता. लीगल है. ऑल बैंक मस्ट कीप CRR. All bank must keep CRR. However, RBI may prescribe separate norms slab for regional rural bank and cooperative bank, similar to left cell for this. All bank must keep CRR. However, RBI may prescribe separate slab norms for regional rural bank and cooperative bank. CRR, SLR are counted on fortnight basis. If not maintained, bank will have to pay penalty interest rate to RBI. This penalty rate are linked with bank rate. This penalty rate is linked with bank rate. CRR and SLR ensure monetary stability of India through two primary functions. CRR assist money multiplier effect. CRR assist money multiplier effect. CRR SLR provide buffer protection during bank run. In an emergency, every depositor want to pull out money from his account at once, mainly due to fake or rumor, sometime due to war or Russia. Theoretically, CRR, SLR can be used for inflation control, but RBI primarily relies on repo rate, its policy rate to combat inflation, not CRR, SLR. Why? What will be impact on SLR change on money multiplier? Can't be written mathematically. CRR, SLR on foreigner and NRI deposit in bank. CRR, SLR development in recent news. CRR exemption for 5 year depending on loan. Outdated technical staff for remove from handout. CRR during and after corona. एक कहाँ है? दो है. 50 रुपया, 5 रुपया, 50 रुपया, 150 रुपया. मेक लोन एक्सपेंसिव. डिमांड गिरेगा, प्राइस गिर जाएगा. टू फाइट इन्फ्लेशन, CRR इंक्रीज, SLR इंक्रीज रेपो. ओपन मार्केट ऑपरेशन, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, RBI सेल करता है तो लोग पैसा देता है RBI को, तो मार्केट से पैसा निकल जाता है. लोनेबल फंड इंक्रीज होगा, लोनेबल इंटरेस्ट गिरेगा. अगर इंटरेस्ट अगर गिरेगा तो फंड ज़्यादा होगा. 4 था, 3 था, 3.5 था, 4 था, 4.5 है अभी.
CRR इंक्रीज टू फाइट इन्फ्लेशन 4.5 अभी मई 2022 का है। ग्राफ इज सेल्फ नेट इंटरेस्ट मार्जिन लिक्विड ओवरहैंग एंड 2000 विड्रॉ। नेट इंटरेस्ट मार्जिन डिपॉजिट इंटरेस्ट 5%, लोन इंटरेस्ट डिपॉजिटर लोग को 5% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा और लोन वाला को इंटरेस्ट रेट 9 का मिलेगा। तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन 4% का फ़ायदा। बट आई डोंट वांट 2000 लोन, ओनली आई वांट 500 का लोन। लिक्विडिटी ओवर है, लेट मी रिड्यूस लोन रेट टू 7%। इन्फ्लेशन होगा अगर लोन घटा देंगे तो, क्या कि डिमांड बढ़ जाएगा। दिस प्रॉब्लम कैन बी कॉज्ड बाय 2000 विड्रॉन। आई विल प्रिवेंट दिस बाय टेम्प्रोरी ICRR। क्या कि अभी 2000 निकाल लिया लोग मार्केट से, तो बहुत लोग अभी मार्केट में पैसा जमा कर देगा खर्चों में। नेट इंटरेस्ट मार्जिन इज डिफरेंट बिटवीन लोन net interest margin is different between loan interest minus deposit interest. This is considered 3 से 4% is considered good and considered healthy and good for banking profitability and growth. Net interest margin लोन वाला से माइनस डिपॉजिट इंटरेस्ट। लिक्विड ओवरहैंग रेफर टू सिचुएशन इन मॉनेटरी पॉलिसी वेयर money supply is higher than demand for loan. Liquidity overhang refer to situation in monetary policy where money supply is higher than demand for money या लोन। मनी सप्लाई पैसा ज़्यादा है, लेने वाला कम है, जमा करने वाला ज़्यादा है, लोन लेने वाला कम है। इसको क्या कहते हैं? लिक्विडिटी ओवरहैंग। रिजल्ट लोन इंटरेस्ट रेट बिकम चीफर। इससे क्या होगा? इंटरेस्ट रेट घट जाएगा। लोन इंटरेस्ट रेट बिकम चीफर। दिस कुड हैव निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस इफ देर इज ए प्रॉब्लम ऑफ हाई इन्फ्लेशन बिकॉज ऑफ चीफ लोन, मोर शॉपिंग, मोर डिमांड, इन्फ्लेशन प्रॉब्लम वर्स। लिक्विडिटी ओवरहैंग, इसमें क्या होगा? पैसा ज़्यादा है, लोन लेने वाला कम है, तो उससे क्या होगा कि लोन का इंटरेस्ट रेट घट जाएगा, जिसके कारण लोन सस्ता हो जाएगा तो ज़्यादा मार्केट में डिमांड हो जाएगा, प्रोडक्ट कम रहेगा तो इन्फ्लेशन हो जाएगा। लिक्विडिटी ओवरहैंग में ऑकर इन फॉलोइंग सिनेरियो ड्यूरिंग वेरी डोविश इजी मॉनेटरी पॉलिसी, USA क्वांटिटेटिव ईजिंग, ड्यूरिंग नोट बंद, डिमोनेटाइजेशन, विड्रॉल ऑफ करेंसी 2023। लिक्विडिटी ओवरहैंग में ऑकर दो कारण। इजी मॉनेटरी पॉलिसी मतलब पैसा बहुत ईजिली हो, और डिमोनेटाइजेशन या विड्रॉल ऑफ 2000 का नोट। इंक्रीमेंटल CRR आफ्टर 2000 विड्रॉन। आफ्टर विड्रॉन ऑफ 2000 नोट, 87% of such notes coming as a bank deposit, meaning public didn't exchange 87% of note with other note like 500 का चार नोट public simply deposit in their bank account. But as we learned in previous section, this can cause problem of liquidity overhang. So RBI come with incremental cash reserve ratio. Normal CRR 4.5, net deposit time जो भी। Incremental cash reserve ratio, whatever the extra additional deposit came during May 19 2023 से एंड जुलाई 28 से, कीप 10% एक्स्ट्रा CRR फ्रॉम इट ड्यूरिंग 12 अगस्त टू 7 अक्टूबर ऑन दोज डिपॉजिट। एग्जैक्ट डेट नॉट इम्पॉर्टेंट, मतलब जो भी आ रहा है उसका एक्स्ट्रा CRR रखना रहता है। ऑब्जेक्टिव प्रोटेक्ट अगेंस्ट बैंक रन कंट्रोलिंग मनी सप्लाई, टू सक ऑब्जर्व एक्सेस लिक्विडिटी
after withdrawal of 2000 to avoid liquidity overhang problem. Will RBI pay interest rate to banker on this? इसमें तो नो, इसमें भी नो. ICRR locked 1 trillion worth money. ICRR locked 1 trillion worth money. Whatever the extra additional deposit come during इतना से इतना तारीख, keep 10% extra CRR from it during इतना से इतना. एक्स्ट्रा पैसा सब कर लेगा जिससे लिक्विडिटी ओवरहैंग नहीं होगा, और इसमें बैंक कोई भी इंटरेस्ट रेट नहीं देगा. ICRR वाज ए टेम्प्रोरी फ्रॉम 12 अगस्त टू 7 अक्टूबर 2023. देन ICRR विल बी withdrawn and removed. Earlier, RBI had issued temporary ICCR on 2016 से 17 आफ्टर डिमोनेटाइजेशन ऑफ 500 से 1000 का नोट. डज ICCR ओनली काउंट 2000 का नोट डिपॉजिट और डज इट काउंट 500 टाइप डिपॉजिट? RBI press release didn't clarify, and I didn't waste time doing self PhD. CRR technical things not important. Following technical operation aspect of CRR not important. Poor cost of benefit and study. Cash reserve ratio referred to share of that bank have to hold as a balance with RBI. इसका बी होना है, ये होगा आंसर. फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट SLR. टू मीट SLR कमर्शियल बैंक मस्ट कीप कैश ओनली. नहीं, बिल्कुल नहीं. SLR इज मेंटेन्ड बाय बैंक विद देमसेल्फ. हाँ. SLR restrict the bank leverage in pumping more money into economic. हाँ. 2 and 3. When RBI reduce SLR by 50 basis point, which is likely to happen? India GDP growth rate increase drastically. Foreign institutional investor may bring more capital into our country. Scheduled commercial bank may cut their lending rate. It may drastically reduce liquidity in banking rate. The bank are required to maintain certain ratio between cash in hand and total asset. This ratio is known as monetary policy qualitative tools. Rate, LAF, repo. RBI takes MSF loan using SLR quota government security. RBI take repo loan using non SLR गवर्नमेंट सिक्योरिटी. MSF में SLR कोटा होगा और रेपो लोन में नॉन SLR गवर्नमेंट सिक्योरिटी होगा. लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी MSF विंडोज 6.5.0.5 सीलिंग ऑफ कॉरिडोर सबसे ज़्यादा इसमें होता है. रेपो विंडो 6.5. SDF विंडो 6.5 -0.25 फ्लोर ऑफ कॉरिडोर. SDF सबसे कम, रेपो विंडो बीच में, MSF सबसे ज़्यादा. विथ ऑफ पॉलिसी कॉरिडोर 50 का ये विथ है. RBI विंडो ऑपरेशन थ्रू ई कुबेर पोर्टल. सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी टू RBI 100 करोड़ का है. प्रॉमिस टू रीपरचेस एट 106 पॉइंट इतना करोड़ में एसेट. ये है नॉन SLR. ये डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट. SDF RBI play reverse repo game without government security collateral.
open market operation. RBI buy or sell government security treasury bill to inject and suck liquidity. SDF RBI play reverse repo game without government security collateral. SDF. ठीक है. RBI liquid adjustment facility. RBI liquid adjustment facility has a two window. Liquid adjustment facility repo rate, liquid adjustment facility reverse repo rate. The interest rate at which RBI lends short-term loan to its client keeping their government security as a collateral. Client enter into agreement, मतलब यहाँ पे RBI lend कर रहा है. कौन कर रहा है? RBI lend. RBI दे रहा है शॉर्ट टर्म लोन टू इट्स क्लाइंट कीपिंग यूजिंग देयर, वो भी शॉर्ट टर्म के लिए, ज़्यादा देर के लिए नहीं, कीपिंग देयर गवर्नमेंट सिक्योरिटी एज ए कोलेट्रल. Client enter into agreement with RBI to repurchase their government security at future date at higher या predetermined price. Bank can't pledge their SLR quota government security for this borrowing. Bank can't pledge their SLR quota government security for this borrowing. SLR quota allowed नहीं है यहाँ पे. Repo also called ready forward transaction. Repo also called ready forward transaction. Repo rate is our policy rate to control inflation. Repo rate is our policy rate to control our inflation. To control inflation. Repo rate is our policy rate to control our inflation. अब reverse repo rate. It is an interest rate which client earn करेगा when parking their surplus money fund with RBI for short period to earn interest. It is interest rate that client earn when parking their surplus fund with RBI for short period to earn interest. Mechanism similar to repo. RBI gives its government security as a collateral to client. RBI दे रहा है, क्या दे रहा है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी एज ए कोलेट्रल टू क्लाइंट. रिवर्स रेपो माइनस X%, मतलब रिवर्स रेपो हमेशा कम होगा रेपो से. रेपो RBI lend शॉर्ट टर्म लोन to its client and demand government security treasury bill as a collateral, जिसमें कि SLR वाला नहीं, कोटा नहीं यूज हो सकता. एट एवरी प्लेस आई डोंट मेंशन अबाउट T bill as it's just reduce speed of revision. Market repo. Player other than RBI such as bank, NBFC, loaning short money to other bank, NBFC, corporate company, demanding financial security, government security, treasury bill, share, bond, commercial paper as a collateral. What does those terms means? Table given in operation twist. Current repo versus neutral or terminal repo rate. Current repo. Whatever is the present repo rate. 6.50. Neutral or terminal repo rate. Percent of repo rate at which inflation is under control and full employment achieved. Percent repo rate at which inflation is under control and full employment is achieved. RBI will not increase the repo rate beyond this point, else it will damage consumer demand and growth GDP. RBI will not increase the repo rate beyond this point, else it will damage consumer demand and GDP growth. This is theoretical concept. RBI has no official decree and declared any such target for it. NAIRU, non-accelerating inflation rate for unemployment. Non-accelerating inflation rate for unemployment. This term is related to unemployment. It is a not loan
interest rate. Non-accelerating uh, inflation rate for unemployment. This is related to unemployment, not for loan interest rate. Non-accelerating inflation rate for unemployment. रेपो स्पेशल विंडो अंडर आत्मनिर्भर भारत. Atmanirbhar set is a set of reform by RBI and government to revive Indian economic after 2020. Atmanirbhar is a set of reform by RBI and government to revive Indian economic after Corona 2020. आरबीआई और गवर्नमेंट दोनों मिल के इंडियन इकोनॉमिक को क्या कर रहा है, रिवाइव कर रहा है. बाय रिवाइव दे दे, रिवाइव, बाय रिवाइव दे दे, दे दिया रिवाइव, रिवाइव वाइव. रेपो TLTRO SLTRO वन टैप विंडोज ऑल बैंक NBFC की मदद के लिए. टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो रेट, टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो रेट ऑल बैंक NBFC के मदद के लिए. शॉर्ट only small finance bank, micro small industry, unorganized sector. SLTRO on tap liquidity windows all बैंक, सारा बैंक को मिलेगा. कॉन्टैक्ट इन इंटेंसिव सेक्टर हेल्थ सेक्टर. ऑन टैप लिक्विडिटी विंडो ऑल बैंक कॉन्टैक्ट इंटेंसिव. AIFI NABARD SIDBI EXIM NBH. If banker perform well in this window, RBI to reward them with higher reverse repo rate. In a watch-out bank doesn't include Paytm Bank. Paytm Bank can't give loan. Repo RBI short-term loan interest rate to client while using non-SLR quota government security as a collateral. Repo interest rate decreased from 5.1 to 4%. Cheaper loan to revive economics. रेपो रेट इज घटा दिया, मतलब वो लोग को कम में ही मिल रहा है बैंकर लोग को. रेपो रेट इतना से इतना गिरा दिया. चीपर लोन टू रिवाइव इकोनॉमिक्स. लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन फ्रॉम 1 year to 3 year. Targeted long term repo operation up to 3 year. Loan at repo to bank with condition that they must invest X% of it in NBFC companies. Special LTRO windows. RBI loan for 3 year repo to only small finance bank. Loan to micro and small industry, unorganized sector entities. On-tap liquidity windows for healthcare. RBI loan for 3 year repo to bankers and loan to hospital, vaccine manufacturer, vaccine importer and medical device maker, oxygen supplies, etc. On-tap liquidity windows for contact intensive sector. RBI loan for 3 year repo to banker, hotel, restaurant, tour operator, business, बस ऑपरेटर, कार रिपेयर सर्विस, ब्यूटी पार्लर, स्पा सैलून, इवेंट, इतना इतना इतना. AIFI RBI loan to large amount of money to all India Financial Institute, NABARD, National Housing, SIDBI, EXIM, NABID. Reverse repo rate cut. Corona led economic slowdown.
लोन डिमांड घट गया, बैंक पार्किंग देयर एक्सेस फंड इन आरबीआई टू अर्न इंटरेस्ट इन फॉर्म ऑफ रिवर्स रेपो रेट. By 2020 March, bank parked 3 lakh crore in RBI in reverse repo. So RBI drastically reduced the reverse repo rate to 3.35 to discourage such laziness of bank. Benefit of reverse repo reduction. If RBI offered 5.9 fixed deposits interest rate to depositor, park it in RBI reverse repo rate 3.35, then SBI is actually making loss. So as RBI hopes SBI will now force to give loan to proactive manner. All, although as per economic survey, bank still continue to park their surplus fund in reverse repo because there is not enough loan taker due to corona slowdown. Monetary policy quantitative tools variable rate reverse repo. Monetary policy quantitative tools rate MSF. Marginal standing facility is interest rate at which RBI lends short-term loan to scheduled commercial bank and regional rural bank with their SLR quota government security as a collateral. MSF में बस यही होगा, SLR कोटा से भी लोन उठा सकते हैं, वो भी शॉर्ट टर्म के लिए. शॉर्ट टर्म के लिए लोन उठा सकते हैं. कौन कौन? शेड्यूल कमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक दोनों उठा सकते हैं, वो भी SLR कोटा से. यही है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और कुछ नहीं है. एम एस एफ हायर देन रेपो रेट है कि इसमें SLR कोटा से हो रहा है, जो कि उसको बैकअप के लिए बैंक रन के लिए बचाया था, इसीलिए. व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन मीनिंग, ये सब ज़रूरी नहीं. लूट पुट गया. बैंक रेट MSF रेपो रेट इंट्रोड्यूस इन RBI एक्ट 1934. बैंक रेट MSF 2011 में आया और रेपो रेट 2000 में आया. व्हाट इज़ द परसेंट ऑफ रेट? बैंक रेट इक्वल टू MSF रेपो रेट प्लस X%. बैंक रेट और MSF दोनों तो सेम ही हो गया. मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी डिसाइड. मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी डिसाइड जो 6 मेंबर का लोग होता है. हु कैन बोरो फ्रॉम RBI? ओनली बैंक. MSF और बैंक रेट, ये कॉमर्शियल बैंक और रीजनल रूरल बैंक दोनों ले सकता है. बैंक रेट ही है. रेपो रेट ऑल क्लाइंट ऑफ RBI, बैंक, नॉन बैंक, यूनियन, स्टेट गवर्नमेंट. इसमें ना बैंक, नॉन बैंक, यूनियन मतलब सरकार तक भी ले सकता है, गजब बात है. रेपो रेट ऑल क्लाइंट ऑफ RBI, बैंक, नॉन बैंक, यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट. कोलेट्रल रिक्वायर्ड यस एंड नो. बैंक कैन प्लेज सिक्योरिटी कोटा फ्रॉम इट्स SLR कोटा. वही 18% वाला से भी निकाल के दे देता है. यस, गवर्नमेंट सिक्योरिटी ट्रेजरी बिल बट नॉट फ्रॉम SLR, क्योंकि ये थोड़ा कम होता है रेपो रेट से. लोन ड्यूरेशन लॉन्गर देन रेपो. बैंक रेट शॉर्टर टर्म यूजली ओवरनाइट टू 14 days. बैंक रेट लॉन्गर देन रेपो, यहाँ पे अंतर आ गया. शॉर्टर टर्म यूजली ओवरनाइट टू 14 days. प्राइमरी यूटिलिटी नाउ डेज मेनली टू डिसाइडिंग पेनल्टी, ये पेनल्टी लगाने के लिए. ऑन इमरजेंसी बोरोइंग बाय बैंक यूजिंग देयर सिक्योरिटी फ्रॉम SLR कोटा सब्जेक्ट टू सर्टेन लिमिट. शॉर्ट टर्म बोरोइंग बाय ऑल क्लाइंट ऑफ RBI. ये रिवर रेपो रेट सब पूरा क्लाइंट, RBI का जितना भी क्लाइंट है सबको मिलेगा पैसा, आ जाओ तुम बस. RBI एक्ट 1934. RBI बैंक रेट स्टैंडर्ड रेट एट विच RBI Act 1934. Bank rate is a standard rate at which RBI buys or rediscount first class security, bill of exchange or other commercial paper. Rediscount basically means repo wala game. RBI. But since introduction of repo rate in 2000, bank rate has become dormant tool.
not frequently used by RBI for lending or by bank for borrowing. So reference book website differ in its present operational status. Some of them would say bank rate is require no collateral and its means for longer term loan. Bank rate accept collateral which can both government security, treasury bill as well as private company security. So in real exam it depend on which book which source examiner. Quantitative tool HDF reverse repo वाला game without collateral. 2013 Urjit Patel Committee on Monetary Policy proposed standing deposit facility. उर्जित पटेल कमेटी ऑन मॉनेटरी पॉलिसी 2013 में कब पहले ने 2013 में उर्जित पटेल कमेटी ऑन मॉनेटरी पॉलिसी प्रपोज स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी SDF स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी SDF client park deposit their extra money in RBI pay them interest. RBI don't give any collateral unlike reverse repo rate. इसमें बस SDF में क्या होता है कि क्लाइंट पार्क करेगा एक्स्ट्रा मनी, उसमें रिवर्स रेपो रेट में RBI गवर्नमेंट सिक्योरिटी देगा, इसमें कोई सिक्योरिटी नहीं देगा. RBI doesn't give any collateral. RBI doesn't give any collateral unlike reverse repo rate. Benefit of SDF to combat inflation. To combat inflation, RBI can suck extra money supply via SDF windows. RBI will not have to pledge government security as a collateral to client. In 2018, RBI Act amended to add SDF facility. 2022 में अप्रैल RBI started launch SDF. RBI also made change in policy corridor. MSF में 6.7%, रेपो में 6.50, रिवर्स रेपो में 3.35, फिक्स रिवर्स रेपो रेट SDF में 6.25. लेंडर कौन है, कौन देगा पैसा, RBI देगा, इसमें भी RBI देगा. रिवर्स रेपो रेट बैंक एंड सम नॉन NBFC, बैंक एंड सम नॉन NBFC, मतलब वहाँ जमा करेगा. एक मिनट भाई. ओनली शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक एंड RRB MSF में. रेपो में बैंक एंड नॉन NBFC. रिवर्स रेपो में RBI ले सकता है और SDF में भी खाली RBI ले सकता है. लेंडर जो देता है और बोरोवर जो लेता है. MSF RBI देगा, रेपो RBI देगा, रिवर्स रेपो बैंक एंड सम NBFC, SDF बैंक एंड नॉन. बोरोवर कौन बोरो करेगा, शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक एंड RRB. रेपो में बैंक एंड सम NBFC, रिवर्स रेपो में RBI मतलब लेगा वो लोग से, और SDF में भी RBI देगा, पर इसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं देगा. बोरो नीडेड टू गिव कोलेट्रल, यस नॉट रिक्वायर्ड. फैसिलिटी अवेलेबल एट डिस्क्रेशन ऑफ क्लाइंट. शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक RBI client and NBFC. Discretion here means suppose client bank and NBFC comes for reverse repo, it not compulsory for RBI to entertain him. But if client banker comes for MSF, RBI will not say no to him. RBI will help him. What is SCB? Policy corridor, liquidity adjustment facility corridor. I want a loan for short term.
I want loan interest depending on collateral. I will give some extra money I want to deposit. I will pay you इतना interest. If government security from SLR इतना मिलेगा. If government security outside SLR तो इतना मिलेगा. If RBI gives government security as a collateral इतना मिलेगा. If no government security SDF 6.25 floor. Policy corridor also known as liquid adjustment facility corridor. Before itna policy corridor with MSF repo reverse repo. After itna policy corridor MSF repo SDF. Thus total with itna. The upper end of corridor ceiling center repo. Lower end of corridor reverse repo. After SDF. SDF has replaced reverse repo as a floor of policy corridor. However, reverse repo was not discontinued. Reverse repo will remain as a part of RBI toolkit. Reverse repo will used as per more discretion of RBI from time to time. Tri-party repo, outdated topic. BPLR, MCLR, external benchmark. The term related to how individual banker decide their loan rate. End of the session. Present handout. Open market operation. Two type. Repo open market operation. Outright open market operation. Outright open market operation already learned in previous section. RBI buys या sell government securities with promise of repurchase. RBI buy or sell government security without any promise to buy them back. Outright open market operation. रेपो में प्रॉमिस होगा, इसमें नहीं होगा. ओपन मार्केट ऑपरेशन. इन्फ्लेशन सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटी. डिफ्लेशन बाय. इन्फ्लेशन में सेल करेगा, मतलब सेल करेगा तो लोग पैसा देगा तो मार्केट से पैसा सक हो जाएगा. अब बाय करेगा तो आरबीआई पैसा देगा तो डिफ्लेशन में पैसा बढ़ जाएगा. ओपन मार्केट ऑपरेशन. आरबीआई बाय and sell union and state government security to control money supply. RBI buying money supply increase liquidity injected in market. RBI selling money supply decrease. सेल कर रहा है मतलब पैसा मार्केट से सेल कर रहा है तो पब्लिक लेगा, पब्लिक पैसा देगा आरबीआई को तो मार्केट से पैसा घट जाएगा. लिक्विडिटी एब्जॉर्ब फ्रॉम मार्केट. Market stabilization scheme. RBI sell special type of government security, treasury bill, cash management bill to suck excess liquidity. Market stabilization scheme. RBI sell special type of government security, treasury bill, cash management bill to suck एक्सेस लिक्विडिटी. सेल करता है. सेल इज इम्पोर्टेंट ईयर. सेल. मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम. आरबीआई सेल स्पेशल टाइप ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ट्रेजरी बिल, कैश मैनेजमेंट बिल टू सक एक्सेस लिक्विड. स्टेबलाइजेशन forex was. This is primary objective to control currency exchange rate volatility. Operation twist, a special type of operation, open market operation explained. Operation twist quantitative tool में.
सिक्योरिटी में डेट, डेट में गवर्नमेंट सिक्योरिटी एंड बॉन्ड. A security means certificate document indicating that its holder is eligible to receive certain amount of money at particular time. This could be security means certificate या document indicating that it is a holder is eligible to receive certain amount of money at particular time. This could be short term less than 1 year, treasury bill, cash management bill, corporate का bill of exchange, commercial paper, promissory note. Long term bills, government security, sovereign bond, bond and debenture. Interest rate usually lower than corporate because of risk is low. क्या क्या सरकारी है. Depend on following factor. शॉर्ट टर्म सरकारी में ट्रेजरी बिल, कैश मैनेजमेंट बिल. शॉर्ट टर्म में सरकारी में ट्रेजरी बिल, कैश मैनेजमेंट बिल. कॉर्पोरेट में बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज, कॉमर्शियल पेपर के कि कॉमर्शियल मतलब वो है कॉमर्स बिजनेस करता है वो भी शॉर्ट टर्म के लिए. प्रॉमिसरी नोट कुछ दिन में ही प्रॉमिस टूट जाता है इसलिए ये लोग प्राइवेट लोग प्रॉमिस करता है. लॉन्ग टर्म में गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सॉवरेन बॉन्ड. और कॉर्पोरेट में बॉन्ड डिवेंचर. इंटरेस्ट रेट इसका कम होता है, इसका ज़्यादा होता है. डिपेंडिंग ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, रिटेल इन्वेस्टर इतना. आरबीआई लॉन्च रिटेल डायरेक्ट स्कीम. अंडर दिस स्कीम आरबीआई permitted retail direct gilt account for retail investor on its e-Kuber online. Retail investor, retail investor RDGA. आरबीआई लॉन्च रिटेल डायरेक्ट स्कीम इन 2021. अंडर दिस आरबीआई permitted retail direct gilt account, retail direct gilt account for retail investor in on its e-Kuber online platform. Both resident Indian, दोनों residential Indian and NRI can open this account. Then retail investor can directly buy treasury bills, government security of union government, state development loan or government security of state government, of sovereign gold and from RBI directly. Application fee to open the account is zero. Benefit: earlier retail investor buy government security indirectly through mutual fund wherein mutual fund manager charge commission fee. Now retail investor can buy directly so doesn't have to pay much commission fee to ये mutual fund manager. Corporate bond. Factor that determine its interest rate. If company want to borrow money, they may issue bond to investor who however buy this Reliance bond worth 1000 will pay him 9.4 interest rate per year and return principal after 15 साल. Usually interest rate offer on such bond depend on factor how it determine corporate bond interest rate. Credit rating of company. Risk कितना है. लोअर क्रेडिट रेटिंग हायर द लोअर क्रेडिट रेटिंग जितना ज़्यादा खतरा है हायर इंटरेस्ट रेट नीड टू बी ऑफर्ड बिकॉज रिस्क ऑफ डिफॉल्ट इज हाई. इन्फ्लेशन. इफ बॉन्ड इज नॉट ऑफरिंग परसेंट देन लेवल ऑफ इन्फ्लेशन देन इन्वेस्टर मे नॉट कम. मतलब महंगाई से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट दो. बैंक डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट. Higher the bank deposit interest rate, higher the bond interest rate need to be offered to attract household to shift money from bank saving या एफडी टू कॉर्पोरेट बॉन्ड. वो सबसे तो ज़्यादा देना पड़ेगा. Yield on government security. If government security yield increases, then corporate will have to offer higher bond interest rate to attract investor from government security investment toward corporate or company bond investment. Bond yield. बॉन्ड यील्ड 7% था. श्रीलंका गवर्नमेंट बॉन्ड 100 रुपया में 7% इंटरेस्ट रेट. बॉन्ड यील्ड इंटरेस्ट बाय कॉस्ट प्राइस 7%. श्रीलंका इकोनॉमिक्स कोलैप्स, राइट्स प्रेसिडेंट रन अवे. प्लीज बाय
My 100 rupees face value का bond I want to exit. I will pay only 63 for this junk bond. Bond yield बढ़ गया. Bond yield is the profit an investor on bond investment. Bond yield is inversely proportional to price. जितना ज़्यादा दाम में खरीदेगा उतना कम यील्ड होगा, जितना कम दाम में खरीदेगा उतना ज़्यादा यील्ड होगा. Thus, bond yield is inversely related to current selling price of a bond in secondary market. If bond demand increases, its selling prices increases, bond yield decreases because of inverse relation. अगर डिमांड बढ़ रहा है तो उसका दाम बढ़ेगा, दाम बढ़ेगा तो यील्ड गिरेगा. अगर उसका डिमांड कम है तो उसका दाम घटेगा, दाम घटेगा तो यील्ड बढ़ेगा. बॉन्ड यील्ड ऑन अदर फैक्टर अफेक्टिंग इट. इफ इकोनॉमिक इज बूमिंग, कंपनीज आर मेकिंग ग्रेट प्रॉफिट, investor may sell bond at lower price in hurry to unlock their money to invest in share of the company because they think it will give more dividend than bond. Current selling price in secondary घटेगा, yield बढ़ेगा. If economic is facing recession, continuous decline in growth rate, company will not make greater profit. Investor sell share and prefer to buy bond hoping they get secured fixed interest rate. Then bond demand बढ़ेगा सेकेंडरी मार्केट में, उसका डिमांड बढ़ेगा तो दाम बढ़ेगा, दाम बढ़ेगा तो यील्ड घट जाएगा. इन्फ्लेशन, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, एक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, ये सब मैटर करता है. ऑपरेशन ट्विस्ट बाय commercial bank are reluctant to lend money to private sector companies because of problem of bad loan non-performing asset. If such companies could borrow money by issuing corporate bond at cheaper interest rate, more factory, more job, more production, more GDP. RBI decided to attack third factor. If the yield on long-term government security decrease, then automatically corporate bond interest rate also decrease. Corporate borrower, please subscribe to my corporate bond. I will offer you 7% interest rate. I will use your invest money to build new factory giving more job, GDP बढ़ेगा. हटा सावन की घटा. Government security yield is 6.75. Risk is minimum there, so I will not invest in your corporate bond unless you offer me 9% interest rate. Start buying. RBI start buying government security. अगर बढ़ने लगेगा तो डिमांड बढ़ेगा तो सेलिंग प्राइस बढ़ेगा, सेलिंग प्राइस बढ़ेगा तो उसका इंटरेस्ट यील्ड घट जाएगा. डिमांड राइज, गवर्नमेंट यील्ड फॉल, लेस अट्रैक्टिव टू कीप मनी पार्क इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी. ओके बाय, I am now ready to invest in corporate bonds 7%. RBI Operation Twist methodology. Since RBI existing monetary policy tool had failed to make loan cheaper for corporate and boost economic, so 2019 December RBI started a special open market operation wherein RBI started buying long-term government security. Their demand increase, price increase, yield decrease. The 10-year government yield lowered from 6.75% to 6.006. And we already learned corporate bond price benchmark keeping government security in mind. So operation twist, lower government security yield means cheaper borrowing for private sector companies because they can borrow money by issuing their long-term corporate bond at much cheaper interest rate than before. When private company meet bank manager to borrow money, it can negotiate loan price. If your bank doesn't lend me money at this cheaper interest rate, then I will issue my own corporate bond. Even the bank lending rate for corporate loan could be reduced. Even the bank lending rate for corporate loan could be reduced. Cheaper borrowing for government for reasons similar to above.
Investor of long-term government security feel discourages to hold government security till maturity. 10 से 14 साल. He will try to sell it to another party RBI and pull out his money. Then he park money into corporate bond, bungalow, car, Goa vacation. Thus it will boost the consumption and economic growth. 1961 Operation Twist was first used by US Federal Reserve. RBI used also done it, officially called Special Open Market Operation, wherein central banks simultaneously buy and sell government security by varying maturity to adjust their yield, which help reduce interest rate on corporate bond and debenture. Easier to mobilize investment, factory expand, GDP growth होगा. Objective of Operation Twist to make borrowing cheaper for companies and government. It was not meant to fight inflation. It ensures better monetary policy transmission for economic growth, because earlier simply reducing repo rate has not helped much in making loan cheaper or corporate. Bond yield and inverted yield curve, poor benefit. For example, bond yield curve, इससे मुझे को पढ़ने में हम वक्त बर्बाद ना करें. निगेटिव यील्ड, इससे मुद्दे को पढ़ने में हमें. इंडिया गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड आर इन्फ्लुएंस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? एक्शन ऑफ यूनाइटेड स्टेट फेडरल रिजर्व, एक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इन्फ्लेशन एंड शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट. Open market operation refer to RBI in secondary market. Buy government security fixed timetable, GSAP, to increase money supply for post कोरोना रिवाइवल. बाय मतलब पैसा देगा, जिसे कर देगा तो मार्केट को देगा तो बढ़ जाएगा. बाय एंड सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटी फॉर यील्ड मैनिपुलेशन, ऑपरेशन ट्विस्ट, to make future borrowing cheaper for government and companies. Buy and sell government security, not fixed timetable. Open market operation to combat inflation and deflation. जिसे में मतलब टाइम लगा के मतलब कोरोना को ठीक करेगा. यील्ड मैनिपुलेशन अपना वो करेगा. टाइम टेबल नहीं रहेगा तो इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन. मॉनेटरी पॉलिसी क्वांटिटेटिव टूल, ओपन मार्केट ऑपरेशन जैसा. फॉर full form, secondary market government security acquisition program. Secondary market government security acquisition program mechanism. RBI buy government security from secondary market on a specified timetable. जैसे ये टाइम टेबल दिया हुआ है. ओपन मार्केट GSAP बेनिफिट, मनी सप्लाई बढ़ जाएगा. मनी सप्लाई इन इकोनॉमिक इंक्रीज हो जाएगा. इन्वेस्टर हु सोल्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटी टू RBI, दोज इन्वेस्टर गॉट मनी, दे मे डू शॉपिंग. मतलब जो RBI को बेचा तो उसको RBI पैसा दिया तो लोग
सामान खरीदेगा, इन्वेस्ट इन अदर कंपनी शेयर, 1+2 इकोनॉमिक ग्रोथ, moral outrage, दो छोड़ो. Every person may not interested in new bank loan. Some investor may interested in selling their previous investment in government security to unlock money. If RBI decreases the repo rate too much, it will result in inflation. A decrease in deposit interest rate offered by bank on saving account, middle class and pensioner affect negatively. जी sir, RBI is buying government security to increase money supply. Post corona revival. Money amount, date and time, calendar, timetable, transparency is systematically announced in advance before starting. Open market operation. Selling. RBI is selling. सेल कर रहा है गवर्नमेंट सिक्योरिटी टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, बाइंग टू फाइट डिफ्लेशन. खरीद रहा है. सेल कर रहा है मतलब पैसा दे रहा है, खरीद रहा है मतलब पैसा ले रहा है, डिफ्लेशन. इट सेल कर रहा है मतलब पब्लिक से लेगा पैसा ना, तो पैसा सब कर रहा है. आप बाय कर रहा है तो पैसा दे रहा है. इट्स टाइम टेबल नॉट अनाउंस in advance. RBI buying and selling government security of various maturities to reduce government yield so future borrowing become cheaper for government and companies. Monetary policy quantitative tool. SLR, CRR, repo rate, etc. control volume of loan. Whereas qualitative tool PSL, LTV control distribution of लोन टू पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ. क्वालिटेटिव टूल में अब हम लोग आ गए. हाउ मच लोन टू पर्टिकुलर सेक्टर, एग्रीकल्चर, रिन्यूएबल एनर्जी. हाउ मच लोन टू पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी, फार्मर, वुमेन, SC ST. सो क्वालिटेटिव टूल ऑल्सो नोन एज सेलेक्टिव और डायरेक्ट टूल. सेलेक्टिव किसको देना है और डायरेक्ट देना है, डायरेक्टिव टूल.